Hi, I'm Tirotma Shom and you're watching me on Bollywood Spy. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कम माल की एक्ट्रेस मौजूद है तिलोत्तमा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि नाइट मैनेजर में जो आपका एक ये डिफरेंट रूप जो देखा था, मैंने देखा है उसके पहले एक छोटा सा झलक कह सकते हैं, बट विल कम बैक टू दैट। बट ये जो लोगों ने भी देखा, लेट मी से दैट यू आर द वन हु वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, कि आप किस तरह से जो आदित्य से क्या करवाना है, आगे क्या होना है, जो करता धरता जो भी है, हम कह सकते हैं आप थे। थैंक यू। तो राइटर्स का कमाल है जी। क्योंकि अगर लिखा नहीं हो तो क्या कर सकते हैं कैरेक्टर्स। बट हाउ वाज द एंटर व्हेन दैट रोल केम टू यू? कैसा लगा था उस टाइप का कैरेक्टर जो आपने काफी अलग तरह की फिल्में की है? ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था, समवॉट लाइक कह सकते हैं डिम्पल इन पठान टाइप का कैरेक्टर, जो पूरा उस तरह का कह सकते हैं। तो Actually, when any character comes to you, it is different. Right. And yet they're same in many ways. So you have to find what is it that's different about this woman and what is similar. And it was like that. There was no, yes, it was a big, the film, the series was mounted with big actors and there was all that. But my preparation was same. Okay. Like as in for any. बट ये जो रिएक्शंस फीडबैक, क्योंकि बहुत कमाल का शो, लोगों ने ट्वीट किया था कि बाकी के एपिसोड्स अब डाल दो करके, ऐसा बहुत पहली बार हुआ था। बहुत मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे इतना प्यार किसी के लिए नहीं मिला है। मतलब जो ऑडियंस ने दिया है लिपिका और इस शो के लिए, मैं बहुत आभारी हूँ। तो मुझे बताइए, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप शूटिंग कर रहे थे, कोविड के वक्त आप लोगों ने शूटिंग की थी, तब श्रीलंका क्राइसिस से भी आप लोग जस्ट बच के निकले थे। कुछ इफ यू कैन शेयर सम एनेक्डोट्स। No, it was just very hard. It's hard enough to make a show because it involves so many people, and then for the producers to work through that kind of an entire country shutting down. I mean, there were locals at that time saying that they don't have electricity for hours. And, through that time, for the producers to continue working in those conditions, for the crew to work through those challenges was very, very challenging. You don't see any of it when you see the show. Right. But that is our industry now. What goes behind the scene is rarely visible. But kudos to my directors who never gave up. BTS की बात करें तो व्हेन यू हैव सम गुड एक्टर्स और गुड टैलेंट एसोसिएटेड, एक अलग ही माहौल हो जाता है शूटिंग के वक्त। एंड यहाँ पे यू हैड अनिल कपूर, शाश्वता वाज देयर, रवि बहल वाज देयर, ऑफ कोर्स आदित्य एंड शोभिता तो आई। कैसा रहा उनके साथ इंटरेक्शंस? बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। शाश्वता के साथ मैंने पहले भी काम किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा कि वो भी सेट में है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। अनिल कपूर इज लाइक फॉर मी मिस्टर इंडिया। मैंने ज्यादातर फिल्म्स देखी नहीं हैं ग्रोइंग अप। मोस्टली आई रेड बुक्स एंड नॉट watched films. So, but despite that, for me, Munna, it's huge. So and he's so charming and so curious and so youthful. He was so curious about Shashwato and me, and he shared so much about his journey, and he wanted to know about our process and where we come from, and I think that's why he's so young. Yeah. Because he's still curious. एक होता है ना, with time and experience, you become jaded. You feel you know everything. Right. And the moment someone feels they know everything, they become boring. Yes. And Mr. Kapoor is really has that youthful spirit of being constantly curious, We call him the youngest superstar. Yeah. बट आई एम श्योर उनको लोग, ये मुझे कई एक्टरों ने कहा है कि वो हर शूटिंग के वक्त लोगों से कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, आप ये काम कर रहे हो, मैं भी करना चाहूंगा, मैं भी ये करूंगा। तो वो डेडी कंपैरिजन नहीं, आई डोंट थिंक कंपैरिजन, आई डिडंट फील दैट। ही वाज जस्ट वेरी वेरी सपोर्टिव एंड but I remember once I had just come to watch a scene because I had never worked with him before and I knew हमारी शूटिंग बाद में होगी। वो दूसरे एक्टर्स के साथ एक सीन कर रहे थे, तो मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा, संदीप से पूछा कि मैं यह सीन देख सकती हूँ, मुझे देख के पता चलेगा कि वो कैसे हैं, सब एक्टर्स कैसे काम करते हैं। सो आई रिमेम्बर बिहाइंड द कैमरा छुप रही थी मैं, तो वो आके उन्होंने देख लिया मुझे, फिर आके मुझे कहा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था बताओ।
अब क्या बताऊं क्यों नहीं मैं तो वो बार बार आके मुझे पूछ रहे थे आपको दिखा कुछ अलग मैंने किया क्या देखा आपने इस बार नहीं मैंने देखा आपने अच्छा और क्या देखा और एक मैं फिर से जब करूंगा फिर से सो आई वाज लाइक ओह वाओ ही रियली वांट्स टू नो you know and I think very few people can have that spirit of constantly wanting to improve themselves and वाह। तो जैसे मैंने कहा कि लोग इसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक फिल्म मुझे जो याद आ गई थी आपकी, चिल्ड्रन ऑफ वॉर। जी बहुत ही कमाल की फिल्म थी, बहुत कम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली देखी, लेकिन योर वर्क वाज फैंटास्टिक इन। थैंक यू तो ये कह सकते हैं कि ये उसी का मतलब समवेयर उस तरह का नहीं था, बट एक आपका वॉयलेंट अगर उस एक्शन या उस एरा में या उस एक जॉनरा में जो कह सकते हैं, उस फिल्म के बाद ये हो सकता। No, I don't think there's any comparison because there she was quite the victim of her circumstances. And here she's a government official, a raw agent. She's a woman who walks in the corridor of power. And she's working in a very male-dominated world. It's a boys' club. Her bosses are all men. Yeah. And she understands that these men have massive egos that need to be massaged, and with her sense of humor, she does it to get her work done. And it was very different from that world, for me, and it was great fun because her approach is with a lot of sense of humor. Yeah. बट उस फिल्म की बात करें तो आज कब जब लोग देखते कम, या मुझे याद है बहुत लिमिटेड रिलीज हुई थी, लेकिन आई एम श्योर आपके पास जितने लोग वो फिल्म देखते होंगे आज भी, दे मस्ट बी कमिंग अप टू यू एंड टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म। एज एन एक्टर कैसा लगता है जब उस फिल्म को कोई फिल्म में जिसमें आपने बहुत कमाल का काम किया बट उतना वाइडर रीच नहीं मिला? वो 20 साल के लिए वैसा ही था। मैंने बहुत काम किया। किस्सा didn't have a huge release. It had Irfan in it. It had a very limited theatrical. So I'm used to it. मेरे फिल्म्स मैंने 20 साल में जो काम किया है वो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लोग देखते थे और दूसरे कंट्रीज में रिलीज होते थे। फ्रांस में 14 मतलब कुछ ridiculous like 14 weeks के लिए sir was running. So I know that my work has had an audience, but it didn't have an audience in my own country. And I was okay with it. It hurt for a long time, but being hurt and angry doesn't help. And at least I'm lucky my work had an audience somewhere. It's better than nothing, right? And I'm used to it. आपने किस्सा की बात की, मुझे याद है मतलब गूज़बम्स मामी फिल्म फेस्टिवल में मैंने जब उसको देखा था, एंड कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लोगों ने, यू वर्कड इन मॉनसून वेडिंग्स आपने शुरू किया था, एज आई सेड आपने बताया 20 साल हो गए, बट कहीं पे एक राइट रिकॉग्निशन एटलीस्ट इन इंडिया आपको किस्सा के बाद मिला? क्योंकि उसकी कुछ सालों बाद हम भी वेट कर रहे थे रिलीज कब होगी, फाइनली इट गॉट। सर दिल्ली क्राइम के बाद हवा बदलने लगी मेरे लिए शायद। किस्सा के बाद 2 साल मेरे पास कोई काम नहीं था। सच फैंटास्टिक वर्क, क्या काम था किस्सा तो पर ऐसे होता है क्या, मतलब क्या बताएं, मुझे भी लगा था कि किस्सा रिलीज होने के बाद बहुत काम आएगा, 2 साल कुछ नहीं आया। तो शायद लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ करे भी तो क्या। और रोहिना गेरा ने चांस लिया मेरे साथ कि अपने फिल्म का लीड बनाया मुझे। पैसे उनके अपने पैसे थे फिल्म बनाए, उन्होंने अपने पैसों से फिल्म बनाया। और ये काफ़ी बड़ी बात है कि मुझे मेन लीड का पार्ट दिया उन्होंने। और उसकी जो सक्सेस थी उसी के वजह से दूसरे प्रोड्यूसर्स को लगा कि हम रोहिमा के साथ चांस ले सकते हैं। तो ऐसे जो 20 साल में जो सारे जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ मुझे चांस दिया, उन्हीं के वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, नहीं तो आप भी मेरे से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? Of course, we have met long back also. पर मैं बोल कि हमारी बिजनेस है ही ऐसी जी। बट एक अच्छा एक्टर तो हमेशा अच्छा एक्टर ही रहता है, भले कुछ भी हो जाए। वो आज नहीं तो कल फिल्म आई जाती। सर के लिए जैसे आपने बात की, यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे, फाइनली भले नेटफ्लिक्स पे जब आई लोगों ने देखी है, मुझे याद है उसके बाद एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म। सिंपल फिल्म थी, कोई ऐसे तो रॉकेट साइंस तो नहीं था उसमें, बट जो कॉन्ट्रास्ट आप दोनों के कैरेक्टर्स में जो था, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट फिल्म। तो उसके बाद रिएक्शंस कैसे थे? I think after that, I feel that directors who wanted to work with me earlier also were being, their producers agreed. Okay. Because I think a producer's fear earlier was,
how will we promote this person? They don't have a pan-India reach because she does only international work. But I think after Sir, it reached so many homes and hearts that I think it made it easier for a director who really wanted to work with me, for the producer to back me. Okay. But didn't Hindi medium help in between? क्योंकि वो भी एक बहुत कमाल का भले छोटा रोल था लेकिन बहुत मजेदार रोल था. Of course it helped. That's what I'm saying. It's not one thing. You know, एक मतलब बहुत सारे ये 20 साल में जिन्होंने मुझे काम दिया उनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ. It's a cumulative effect. एक चीज नहीं कि ये ओवरनाइट कुछ हो गया बदल गया. बट इरफान सर के साथ आपने कमाल की फिल्में, आई मीन किस्सा, हिंदी मीडियम, स्कॉर्पियो, अगेन और एक और फिल्म, 3-4 फिल्म्स. हमारी पहली फिल्म थी शैडोज ऑफ टाइम, किस्सा के पहले. How do you remember वो सब शूटिंग प्रोसेस क्या याद आती है? How can I forget? He's a very important part of my life, and I think he's a very important part of all our lives. He's given Indian cinema so much that I'm very, very grateful. I mean, I'm extra grateful that I got a chance to work with him. But even if I had not, there is so much to learn from the work that he has done. And he had told me that there's no point getting angry and cynical. कि वो बोलते थे कि मीना कुमारी मत बन जाना, कि मतलब रोती रहना, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम रोगी, तुम्हारे साथ लोग और कम काम करेंगे, तो अपने क्राफ्ट पे ध्यान दो, कोई तुम्हें काम नहीं दे रहा, किताब पढ़ो, फिल्म्स देखो. And so I think because of him I was able to continue, you know, and I've been very lucky. I've had some great friends and great teachers that have made this journey possible, you know. बट जहाँ हमारी इंडस्ट्री में यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं कोई एक चीज पसंद आ जाती है तो सोचते हैं कि चलो इनको इसी तरह के रोल के लिए अप्रोच करो. तो आई एम श्योर सर के बाद और दिल्ली क्राइम के बाद आपके पास उसी तरह के मैक्सिमम लाइन से ऑफर्स भी आए होंगे. हाँ, बट आई रिफ्यूज दोस. आई डोंट वांट. कितना टफ होता है टू से नो? इट इज टफ टू से नो बिकॉज यू डोंट नो कि यही मिलेगा या कुछ और भी आगे मिलेगा कि नहीं. बट आई एम ग्लैड बिकॉज आई सेड नो टू doing another part like Ratna and Sir, but Delhi Crime happened, which was completely different from. जी. But Delhi Crime के बाद. You know, and Delhi Crime के बाद, no, I think people are giving me different kinds of parts. Night Manager is completely different from. Yes, totally. You know, so I'm really glad that the directors can see me in different ways, and that I am actually nobody. I don't have such a strong sense of. You know, I think I can, it's like pani ke jaise hu, just, like, you know, so maybe because I don't have such a strong sense of one thing, it's... You have a strong sense of performance, वो तो कह सकते हैं, जिसमें भी आपको लोगों ने देखा वो याद तो रखेगा, वो उस चीज को तो हम कह सकते हैं, है ना? Thank you. Thank you, I'll take it. But इसके बाद क्या हो रहा है? Love stories, I guess? Yes, and there's quite a few other shows that I've done. I've done 5 other web series that will be coming out soon. And so, yes, I've worked very hard and I hope to continue working hard. And yeah. So, जो इरफान ने आपको सजेशन किया था, वो फिल्में देख रही है अभी? Do you watch the commercial ones and the big ones which are? I watch as much as I can, but it's not just about films. Okay. I mean, that's not what Irfan. I think Irfan was very curious about nature, about people, about different kinds of people, not just filmy बातें और filmy discussions. वो हम 12 घंटा वैसे भी शिफ्ट में कर ही रहे हैं जी. तो उसके मतलब जिंदगी में उसके अलावा क्या है, उसमें जो दिलचस्पी रखना. That he has taught me. Okay. And that is very important for me. Wow. Actually, on that note, we wish you all the best for all your web shows and the upcoming projects. And thank you for being with us. And thank you for doing such fantastic work. Thank you so much. Thank you. Take care.